सुजाता जी, थैंक यू वो वेरी मच। सुजाता जी का विशेष धन्यवाद। सुजाता जी शायद पहली बार प्रेजेंटेशन दिया है और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सारगर्भित और इन्फॉर्मेटिव रहा। Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to welcome you all on Independent Research Ethics Society 1840th webinar, Sloths Take Care and Protect Ecosystem. In our society, everybody has its own existence, own needs, own habitat, and we should respect them. So, to celebrate Sloths Day, October 20, it is being celebrated on every October 20, but we are conducting this webinar earlier one day because tomorrow we have already scheduled 2 webinar on Biostatistics Day and Osteoporosis Day. So thank you very much. Thank you very much for joining. I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir to welcome the speakers. Welcome. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. It's our great pleasure that we are again assembled over here to this webinar, having the number 1840, 1840, and the very special topic pertaining to a very, very special living being, sloth. And we are supposed to have some cordial, say, feeling and affinity towards all the creatures, all the animals, aves group, birds, every, and even the our aquarius animals. So here we are fortunate enough to welcome our most revered Dr. Andy Sharma sir. He has completed 88% of his life, and now he is still as young as any young person. So it's our great fortune that we are receiving him and we are having amongst us his presence. And he is a ocean of knowledge, irrespective of any subject, and the two with a clinical experience. He has expended his life 60 years within all these animals and all these creatures, saving them, nursing them, protecting them, and warding off their injuries and whatever the shortcomings happened in their life. So I welcome with full heart Professor Shri Andy Sharma Sahab, and I am very eager to meet him at Lucknow if the God will permit me in the first week of November. Moreover, our other speakers of today is Madam Parul Joshi ji and Dr. Pranjal ji. So I am again welcoming them. If they are there, we will be having otherwise. Suparna ji and Sekat ji, sir. I'm sorry. I'm sorry. I have seen the other slide. Oh, sorry. Dr. Suparna Sanyal Mukherjee ji and Dr. Sekat Basu ji. These two are our other great speakers and great lovers of our AYUSH SAMRIDDHI platform. So welcoming all these big guys and big dignitaries, we are here to listen a lot of from you people. So with these words, I again welcome, and we are just going to have a good information regarding the protection, the caring of sloths, and a very new topic. And if even it is an old one, it will become new with the help of your Ashirwad and with the help of your Udvadan and address. Thank you so much, and over to Professor Om Shamaji. Namaskar. थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब आदरणीय डॉक्टर एनडी शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। उनके विचारों के लिए समय की पाबंदी उनके लिए नहीं है। आदरणीय एनडी शर्मा, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए, कुछ बोलिए सर। आवाज आ गई? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्राद्ध का जो विषय है, ये भी अपने आप में बहुत ही अजूबा ढंग का है। जैसा कि ये पशु जो है, ये न तो बंदर की तरह से है और न एंटीटस की तरह से, बल्कि उनके बीच का है। और ये जो है आमतौर से
ये फॉलीबोआ स्पेसीज जो होती है उसके लिए बिलोंग करता है, और ये अब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और केवल साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये पाए जाते हैं। ये स्लॉथ्स जो हैं दे आर टेरिटोरियल ग्राउंड स्लॉथ एंड ट्री स्लॉथ्स। आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी साफ आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू आवाज आ करते रही रहिए। है? अच्छा अच्छा, वो बंद हो जाता है ना तो लगता है कि नहीं आ रही है आवाज। तो ये जो है ये न्यू टॉपिकल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, Genus mammals constituting the suborder Polyboa, including the extant abnormal tree sloths and extinct terrestrial ground sloth, noted for their slowness of movement. यानी इनकी सबसे खास बात यही है कि बहुत ही लेजी किस्म के एनिमल्स हैं और ये छोटी जात के भी हैं और बड़ी जात के भी, दोनों प्रजातियों के अंदर इनको पाया जाता है। आमतौर से इनकी साइज जो है वो 2.5 फीट तो कहना चाहिए 2 से 2.5 फीट होती है लॉन्ग, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज weigh from 8 to 17 pounds or 3.6 to 7.7 kilogram. There are two main species of the sloth identified by whether they have 2 or 3 claws. सबसे खास बात यह है कि इनके जो क्लास हैं वो क्लास कुछ के 2 होते हैं और कुछ के 3 क्लास होते हैं, और उन क्लास की वजह से इनके लिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो इनका फ्रंट फीट है उसको देख करके ये पहचाना जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं। और ये आमतौर से पेड़ों के ऊपर लटक कर या पेड़ों के नीचे जमीन में, तो इनकी क्वालिटीज है। इसीलिए इनको स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ट्री स्लॉथ्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ हैंगिंग अपसाइड डाउन इन द ट्रीज। यानी बहुत ही मजेदार एनिमल है ये। ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, sloths are considered to be the most closely related to anteaters. जैसे कि एंटीटर्स होते हैं जो कि चींटियों को खाते हैं, ये उनसे बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करते हैं, एंड दे आर genus ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। Plants having the tropical forests, Central and South America, with their long arms, इनके आर्म्स काफी लंबे होते हैं, and shaggy fur, resembling like monkey, but they are actually related to armadillos or anteaters. They can be 2 to 0.5 feet and long, 0.6 to 0.8 meters long, depending on species, weigh from 8 to 17 pounds, 3.6 to 7.7 kilograms. There are two main species. Sloths are identified by their claws. Some have got 2 claws and some have got 3 claws. So their species are identified from their frontal claws and their roundest head, looking eyes, tiny ears and stubby tails. Tails जो है वो भी इनकी बहुत छोटी होती हैं, and they are extant sloths. There are almost 6 to 7 species have been recognized, and 2 genera, Bedipus, 3-toed sloth, and Coleopus, 2-toed sloth. यानी कि ये जो हैं कुछ के अंदर ये जो स्पीसीज के मैंने नाम लिए, बेडिपस एंड कोलियोपस, इनके अंदर कुछ के अंदर तो 3-toed होती हैं और कुछ के अंदर 2-toed होती हैं। यानी कि इनके जो कहना चाहिए पंजे जो हैं वो 3 क्लास या 2 क्लास जो हैं ये आमतौर से देखने में आते हैं। और इनका ट्रेडिशनल नेमिंग, all sloths have 3 toes on each rear limb.
यानी कि जो पिछले पैर हैं उनके ऊपर। Although two-toed sloths have only 2 digits on each forelimb, जबकि 2 digits वाले जो हैं वो उनके अगले पैरों के ऊपर जो हैं 2 digits पाए जाते हैं। The two groups of sloths are from different distantly related families and are thought to have evolved their morphology by a parallel evolution from terrestrial ancestors. Besides the extant species, many species of ground sloths ranging up to the size of elephant, यानी कि केवल छोटे ही नहीं है, यानी एलिफेंट तक की साइज के ये पाए जाते हैं। Like Megatherium, inhabited both North and South America. During the Pleistocene epoch, however, they became extinct during the Quaternary extinct event around 12,000 years ago, along with most large animals across the Americas. The extinction correlates in the time with the arrival of humans. But climate change has also been suggested to have contributed for this change. So these sloths are very uncommon animal, और ये केवल कहना चाहिए कुछ बंदर की शक्ल में भी है, कुछ एंटीटस की शक्ल में भी है। इनकी पूंछ बहुत छोटी होती है और सभी स्पेसीज होती हैं। इनके अंदर किसी के अंदर 2 क्लास होते हैं जो कि अगले पैर में होते हैं। 3 क्लास वालों में आमतौर से पिछले पैर पंजों में होते हैं, और ये आमतौर से फल फूल खाते हैं। इनका भोजन जो है, क्योंकि कुछ जो है पेड़ों के ऊपर लटकते रहते हैं और कुछ जमीन के ऊपर चलते रहते हैं, लेकिन इनका भोजन जो है, एक और बहुत विशेष बात यह है कि दे आर हर्बीवोरस। और जैसे कि एनिमल होता है कि इनके भी 4 पेट होते हैं, यानी कि ओमेसम, एबोमेसम एंड गैस्ट्रिक स्टिका से इनके जो हैं, जैसे कि हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर 4 पेट होते हैं, उसी प्रकार से इनके अंदर भी 4 पेट होते हैं। और ये इनका भोजन जो है वो प्राकृतिक रूप से पेड़ों के द्वारा या वेजिटेरियन ये होते हैं। तो ये इनकी जो लाइफ स्टाइल है कि जंगल में भी रहते हैं और आमतौर से पेड़ों के ऊपर लटकते हुए पाए जाते हैं या जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। इनका साइज जैसा कि मैंने बताया कि छोटे भी हैं और हाथी के साइज तक के पाए जाते हैं। लेकिन ये अब इनके स्पीशीज जो हैं वो ऑलमोस्ट इनकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसलिए अपने यहाँ तो हमने अभी कहना चाहिए सिर्फ कागजों पे ही देखा है, लेकिन आमने सामने इसको देखने का अवसर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये थोड़े से के अंदर जो इस स्पेसीज की विशेषताएं हैं और जो हमने जानी है कि दे आर वेजिटेरियन एंड हैंग, पेड़ों के ऊपर लटकते हुए या जमीन के ऊपर चलते हुए ये पाए जाते हैं। और प्योरली इनका भोजन जो है वो वेजिटेरियन है और वनस्पति खाने वाले जीव हैं, और ये इनका लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। केवल नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर इस समय ये पाए जाते हैं, और लगभग अपने यहाँ अभी तक इंडिया के अंदर जो है इसकी स्पेसीज जो है वो हमने नहीं देखी है, और बहुत कम ही जानकारी इसके संबंध में पाई गई है। तो ये एक थोड़ी सी जो जानकारी मैंने देखी है उसके संबंध में यही कह सकता हूँ कि ये ऐसे पशु हैं जो एंसेस्टर के अंदर एंटीटस की तरह से होते हैं, और कुछ 2 पंजों वाले होते हैं, 2 कहना चाहिए नाखून वाले होते हैं, और कुछ के अंदर 3 होते हैं। आमतौर से जो 2 क्लास वाले हैं उनके पंजे जो हैं वो अगली तरफ में होते हैं, और 3 क्लास वाले जो हैं आमतौर से पीछे के पंजों में होते हैं। ऐसा आमतौर से देखा गया है। और ये इनका जो टेरिटोरियल रीजन है वो इस समय केवल ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ से
या तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या अभी हम लोगों ने इसको देखा नहीं है या इनके ऊपर रिसर्च नहीं की गई। लेकिन केवल इसके लिए जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है उसको इतना ही कहा जा सकता है कि ये जंगलों के अंदर ही रहते हैं और इनका ह्यूमन से टच जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये जमीन के ऊपर या पेड़ों के ऊपर खेलते कूदते दिखाई पड़ते हैं और इनकी शक्ल जो है वो एंटीटस की भांति होती है या छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह से कह सकते हैं, जो फरी एनिमल्स होते हैं उनकी भांति इनका शक्ल देखने को मिलती है। क्योंकि मैं इस तरह लाया नहीं हूँ लेकिन एक फोटो मैंने जरूर देखा था कि उससे आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी शक्ल जो है वो इस प्रकार से होती है। इतनी जानकारी मेरे लिए अभी तक इससे प्राप्त हुई है और इसके संबंध में जो एक और कोई जानकारी हो तो मैं जानना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से। आवाज आ रही है? बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े सरल शब्दों में उसकी पूरी कुंडली खोल दी, मैं तो ये कहूंगा कुंडली उसकी स्लॉथ की। क्योंकि बहुत बहुत कम अच्छा, जानकारी अग्निहोत्री है, सर। हमको भी बहुत कम जानकारी है, सिर्फ इधर उधर से ही जानकारी इकट्ठी करना पड़े। वो आपका जो अब देखा कि आज उसमें लेक्चर है तो हमने कहा अच्छा भाई ढूंढा जाए तो ढूंढने के बाद थैंक जो यू कुछ सर। मिला तो वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। और बाकी बहुत क्योंकि अभी इसको हमने देखा नहीं है और नहीं देखने की वजह से इसकी केवल जानकारी जो है वो कागज पर ही हमें को देखने को मिली। और अपने यहाँ चूंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो इसलिए इनके संबंध में बहुत कम जानकारी और इतनी अवश्य है कि ये वेजिटेरियन है, पेड़ों के ऊपर या जमीन के ऊपर रहते हैं और इनका भोजन जो है वो फल फूल है और हर्बीवोरस एनिमल्स की तरह से रहते हैं और ये एंट ईटर्स की तरह से इनकी शक्ल दिखाई पड़ती है। मुंह चेहरा जो है वो बहुत ही छोटा होता है और अराइवल ऑफ द ह्यूमंस बट क्लाइमेट चेंज हैज आल्सो बीन, यानी जो क्लाइमेट चेंज हुई है उसकी वजह से ये सोचा जाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से चेंज हुआ है कि ये एक बहुत खास बात है कि ये बहुत लेजी किस्म के हैं, बहुत ही स्लो मोशन रहता है। इनका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही नोटिसेबल होता है। ये प्रीडेटर्स होते हैं सच एज हॉक्स एंड कैट्स विच रिलाई हेविली ऑन देयर आई साइट व्हेन हंटिंग। दे algae that goes on sloughs also helps them to avoid predators by letting them blend with green leaves. They rarely come down from the trees. About once every week, they descend to go to the bathrooms, slowly moving about by digging their front claws into the dirt and dragging their bodies. ये इनकी विशेषता है कि ये जो हैं बहुत ही अ, अंदर रहने के आदी हैं, बहुत ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। आपको हम तकलीफ देते रहते हैं, क्षमा चाहते हैं हम नहीं लेट नहीं, ये नाइट तो को। मेरा सौभाग्य है धन्यवाद, अरे आशीर्वाद ये तो हमेशा। मेरा सौभाग्य है। पिछली आपका दफे जो आशीर्वाद मिलता रहे, हमें तो यही नहीं प्रार्थना है। पिछली दफे जो आपका वक्तव्य था उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वास्तव में कि हम लोगों की रुचि जो है वो इन सब चीजों के अंदर कितनी कम है। मैंने बहुत से लोगों से दिया, असल में हो क्या क्या है, आजकल हम लोग जो हैं आर्थिक दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि मैंने दो चार लोगों को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मिलेगा क्या? हम्म। मैंने कहा मिलेगा कुछ नहीं, आपको जो कुछ भी है आपकी प्रसिद्धि मिलेगी। बोले भाई उसका क्या करना है? हाँ हाँ मैंने ठीक है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ क्योंकि पिछली दफे मैंने जो आपकी बातचीत सुनी थी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने कहा कि लाओ अच्छा दो चार लोगों से हम बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने उनका मिलेगा क्या, बस यहीं पर आकर के बात समाप्त हो जाती। नहीं सर, लेकिन फिर भी आप प्रयास जैसे भी करते रहना है। लोग हैं, और आपके आशीर्वाद से 4.5 साल की यात्रा में 6,000 स्पीकरों ने हमें आशीर्वाद दिया है। वाकई नहीं वो नहीं, भी प्रयास जानते हैं करेंगे, हम निस्वार्थ प्रयास भाव करते से हैं कर रहे कुछ हैं। लोग जुड़ेंगे। जी जी। मैं डॉक्टर शैकत बसु जी को
सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों पर। डॉक्टर सैकत जी। Am I audible to you, Dr. Saikat Basu ji? जुड़े हुए तो हैं, ये ऑन नहीं किया है, माइक की गेटिंग रेडी। हाँ जी, जी नमस्कार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आगे आगे। आप हो सके तो चित्र दिखाइएगा, स्लॉथ क्या आज होते हैं, चित्र कैसे दिखाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा बैक टू बैक मीटिंग चल रहा है। लाइक उसी उधर से मीटिंग मैंने चोरी से आपके गली में आ गए हैं, उन लोगों को पता नहीं है। इधर कार्य संपन्न करने के बाद उधर फिर से घुस जाएंगे, उसे पता नहीं वी आर चलेगा। फॉर्चुनेट इनफ, हम लोग बहुत नो नो लकी नो हैं। नो, इट इज ऑलवेज एंड इट इज 1840 और समथिंग है ना आज, जी 1840 बन गया है। अरे 1840। हाँ, तो मैं तो वो मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ देखकर जो भी कर रहे हैं वो हमें चाहिए, वो वाला जो फ्रेम है वो हमें चाहिए। और लाइक पवन जी इतना एंथुजियास्टिक है, तो अब हमें तो अच्छा लगेगा ही। तो शुड आई कैन आई स्टार्ट देन? या Yes, प्लीज प्लीज। yes. अच्छा, मैं थोड़ा बता दूं, स्लॉथ के ऊपर तो मैं एज ए एनिमल्स थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। मैडम ने कहा कि ये जो वर्ड स्लॉथ है ना, लाइक हमारे हिंदी तो संस्कृत से आए हैं, तो लाइक नॉट अबाउट द देवनागरी स्क्रिप्ट बट द लैंग्वेज इज वेरी वेरी सिमिलर। लाइक लैटिन में भी स्लॉथ और हमारे संस्कृत में भी स्लॉथ उसके मतलब स्लो है। जैसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं इन लैटिन, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। तो अगर आप ऑस्टियो देखिए और अस्थि कहेंगे, तो जो अस्थि हमारे संस्कृत में है वही ऑस्टियो में भी बोन्स है। सो ये कहा जाता है कि देयर इज अ इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन संस्कृत एंड लैटिन इन समवेयर, सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस लैंग्वेज मे हैव ओरिजिनेटेड एट द सेम टाइम, देन वन ब्रांच इनटू लैटिन एंड वन ब्रांच इनटू संस्कृत। इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे थ्योरीज है। तो मैडम ने आज ऐड किया कि शी इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन बायोलॉजी, मतलब जैसे हम जूलॉजी करेंगे, लेकिन ये जो स्लॉथ है मतलब स्लो है। स्लॉथ से बहुत सारे इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस बनते हैं, लाइक डोंट बी अ स्लॉथ, डोंट वर्क लाइक अ स्लॉथ, डोंट बी अ स्लॉथ इन लाइफ। मतलब आप टाइम नष्ट ना करें, लाइक वेन एवर यू गेट योर अपॉर्चुनिटी ट्राई एंड यूटिलाइज द टाइम। सो शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट द फिलोसफी ऑफ लिटिल बिट ऑफ दैट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जूलॉजी ऑफ दैट। स्लॉथ जो ये एनिमल है, मेरे पूर्वतन वक्ता ने तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको अभी दे चुके हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, आई हैव बीन एबल टू लिसन टू व्हाट ही हैज सेड। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्लॉथ व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉट सीन इन एनी अदर एनिमल्स। वो ऐसा ये है कि ये जो स्लॉथ है, दिस एनिमल इज रेस्ट्रिक्टेड टू लैटिन अमेरिका, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाहर और कहीं नहीं मिलता है। सो इट टेक्निकली कहा जाता है दिस इज एन एंडेमिक एनिमल। अगर इसका इवोल्यूशन देखा जाए तो लाइक अराउंड 12 to 15,000 ईयर्स पहले साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, चिली, ऐसे बड़े बड़े कोल्ड इलाकाज में जो आज माउंटेनस है, जहां पर स्नो या बर्फ गिरता है, दिस एनिमल इज अ ट्रॉपिकल एनिमल। जो वार्म टेम्परेचर है ब्राजील से लेकर कोस्टारिका, क्यूबा, पनामा, निकारागुआ, इन सारे इलाका जहां पर ट्रॉपिकल टेम्परेचर्स है, हायर टेम्परेचर्स है, दिस एनिमल सर्वाइव्स इन देयर। But there was a time this animal was also found in areas where they have become extinct. और ये आज के बात, ये मॉडर्न एक्सटिंक्शन नहीं है, दिस इज लॉन्ग लॉन्ग फार बैक 12 to 15,000 ईयर्स बैक, क्वार्टरनरी पीरियड, जहां पर कहा जाता है कि दीज एनिमल्स वेर प्रेजेंट इन एरियाज सच एज अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे, जो चिली, जो दीज आर वेरी कोल्डर एरियाज, कोल्डर शेड्स ऑफ द एंडीज माउंटेन इन दीज एरियाज। तब के जमाने में जो स्लॉथ्स मिलते थे, they were giant sloths, मतलब these sloths were as big as elephants. Whether they were ferocious, whether they are very aggressive, we have no way of knowing because we only get to see their giant fossils. But आज जो sloth है और उसके जो ancestral fossil है,
उससे वो मतलब आप कहा जाए दे आर पॉसिबली 1/15 और 1/20 ऑफ देयर ओरिजिनल साइज। बहुत सारे ये जो स्लॉथ्स है वो दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ स्लॉथ दैट हैज हैपेंड इज सम कैरिबियन आइलैंड्स, जहां पर कैरिबियन स्लॉथ्स मिला जाता था। दिस हैज बिकम एक्सटिंक्ट इन अराउंड 5 to 6,000 years। वहां पर भी एक छोटा सा स्लॉथ मिलता था। तो कहा जा रहा है कि जो साइंटिस्ट का ये कहना जाता था कि sloths usually used to be as big an animal like an elephant। उससे धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इनका इवोल्यूशन होते इसके साइज बेयर की साइज की तरह आ गया, भालू के साइज की तरह आ गया। ओवर द टाइम दे स्मॉल, उसके साइज का रिडक्शन होते गया। अभी दिस इज मोरलेस एट द साइज ऑफ अ मंकी। हमारे जो जो कॉमन मंकीज हम लोग दिखते हैं ना, रेड बोनाबस मंकीज जो हमारे बनारस में है या कहीं पर भी जाइए, जो छोटा नॉट द हनुमान लंगूर, वो जो छोटा बानर है उससे थोड़ा सा बड़ा है, एक्सट्रीमली फारी एनिमल। लेकिन ये भी है कि दे आर वेरी वेरी स्लो। लेकिन हम लोग ये पूछते, वी डू नॉट नो कि ये स्लॉथ एंशिएंट पीरियड में जब उसके फॉसिल्स मिलते हुए आज से 15,000 to 6,000 years before, because by looking at the fossil it is very difficult to say whether they were a fast or normal walking animal or they have become very very slow or sloth like today। बट ये स्लॉथ वो ऐसा नहीं बना। ये स्लॉथ बनने का उसका बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी एडवांटेज है। ये प्रिडोमिनेंटली हर्बीवोरस एनिमल है। हमारे पूर्वतन वक्ता ने बताया, इट इज ट्रू दैट दे आर प्रिडोमिनेंटली हर्बीवोरस, सो दे आर मोस्टली लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स को भी कंज्यूम करता है, सीड्स या बर्ड्स भी खाते हैं। बट अंडर कंडीशन ये देखा गया है, जस्ट लाइक मंकीज, दैट मंकीज विल ईट इंसेक्ट्स, monkeys will catch and eat lizards. These animals, while they are in the top of the trees, if they get hold of insects, if they get hold of lizards or small mammals, they will eat them. Why do they eat them? Because insects are a very strong source of protein। इसके लाइक प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए और प्रोटीन लाइक इंस्टेंट प्रोटीन सप्लाई के लिए कभी कभी ये इंसेक्ट्स या छोटा मैमल्स या छोटा बर्ड्स भी खाते हैं। कहीं कहीं का देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है, समटाइम्स दे विल मूव इनटू अ बर्ड्स नेस्ट हाई अप इन द ट्री एंड दे विल स्टील एग्स एंड दे विल आल्सो ईट एग्स। पॉसिबली फीमेल जो एनिमल्स होते हैं जब उसके बच्चे देने का टाइम आता है, मे बी दे सफर फ्रॉम प्रोटीन शॉर्टेजेस, दे पॉसिबली अंडरस्टैंड देम थ्रू देयर इंटरनल सिस्टम एंड देन दे ट्राई एंड ग्रैब एंड एक्सट्रैक्ट सम प्रोटीन ड्यूरिंग दिस, पॉसिबली ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। स्लॉथ्स के ऊपर बहुत हाई क्वालिटी रिसर्चेस ओवर द वर्ल्ड वेरी नहीं हुआ है। वी डू नॉट नो वेरी मच अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस स्पीसीज। दो डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ स्लॉथ्स आर अवेलेबल। टू स्लॉथ्स जो एनिमल है ये 4 लिम्ब उसके है, जैसे मंकीज के है, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू द मंकीज। उसके फेस जो है बड़ा फनी है, इट लुक्स लाइक मंकी बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द आर्बोरियल एंड द ट्री पार्ट। और कहा जाता है कि दे इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स टू डिफिकेट, वो पॉटी और यूरिनेट करने के लिए कभी कभी नीचे आता है। some sloths come down after 10 days, sometimes come down after 8 days, but it is quite strange क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो स्लॉथ्स और मंकी स्टडी किए हैं वो कहते हैं कि मंकीज दैट लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, दे डू नॉट नीड टू कम डाउन बिलो टू क्या कहते हैं फॉर डिफिकेशन और फॉर अपने मलमूत्र त्याग करने के लिए। वो ट्रीज के सेफ्टी छोड़कर उसे जंगल के नीचे आने की तो उसके जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन डिफिकेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रीज। लेकिन ये देखा गया है कि डेफिनेटली आफ्टर 7 to 8 days साइकिल दीज एनिमल्स also come down and they defecate, they will dig a hole in the ground, they will put their malmutro inside it and then they will cover it. So they do fertilize the forest in this particular way, but then they become quite vulnerable to be attacked by other animals. But strangely, as researchers have documented, there are very little incidences of sloths being attacked while they are walking on the ground। ऐसा बहुत कम है। हो सकता है कि कभी रोड क्रॉस करते हुए दे मे गेट क्रश्ड बाय अ ट्रैवलिंग कार, लेकिन ऐसे कोई एनिमल्स उसे अटैक किया है
while they are in the ground where for very very time it has not been recorded very well. So ये कहा जाता है they may look sloth but they are not stupid. They know the time when it is safe for them to come to the ground, and this is only that particular time they come to the ground. They do defecation. One other thing I believe that they come to the ground, वो नीचे आते हैं पॉसिबली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ट्रीज के ऊपर भी पानी मिलता है, उधर भी बहुत सारे एक बड़े ट्रीज के ऊपर बहुत सारे छोटे पौधे उगते हैं. दे आर एपिफाइट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस बिग प्लांट्स, एंड समटाइम्स दीज प्लांट्स विद इन देयर लीव्स दे आल्सो स्टोर रेन वाटर. So these animals which usually live on high canopy also have access to water. If they live on the tree, they know where to find water. Some of the trunks of these trees also store water, so they can also get water from there. But I also feel that it is not just for defecation. Sometimes to get fresh water from the lakes or adjoining water bodies, they may be coming down, but it is very still strange. An animal which cannot travel on the land, they have been found to cross roads. They have been sometimes found to get down from one tree and walk to and move to another tree, which is very reasonable. एक ट्री में अगर ज्यादा sloths का nest बन गया तो there is competition for food among them. So sometimes if there is another adjoining tree that is solitary and not inhabited by other sloths, they like moving into that particular one. ऐसे ये बड़ा like solitary animal है, they are not very easy to spot. The reason they have become sloth is their metabolism is also very slow. They can regulate their temperature according to the fluctuation of their temperature of the tropical forest. Tropical forest में क्या होता है, कभी कभी you get bright sunlight, sometimes you get heavy rain, sometimes if it is a clouded forest there is mist collecting at the top, you will be shivering, feeling cold. So sometimes within the trees the temperature region fluctuates a lot, so it's quite challenging to live in the tropical forest, and also it is very moist. कभी ना कभी हर तरह के बरसात होते रहते हैं. So these animals which are of two distinct types, they have 3 toes or they have 2 toes. जो 2 toes वाले sloths है, they have been found to cross one tree to another, और monkey की तरह एक plant से और एक plant, they cannot make a छलांग, they cannot make a jump from one tree to another. But it has seen if 2 adjoining trees are very close to one another, then just like हम लोग military में करते हैं ना, they will crawl the rope and reach the other side of the obstacle. ऐसे sloths भी, they can slowly move from one tree to another if 2 trees are very close to one another and these branches are touching to each other, so that the branches from a bridge and they can move from one branch to one tree to another. ये वो लोग कहते हैं, करते हैं. They only get together during breeding. Males एकदम female से separate रहते हैं, लेकिन फीमेल्स को देखा गया है समटाइम्स फॉर प्रोटेक्शन और सेफ्टी 2 or 3 फीमेल्स they can huddle together. They लोग एक साथ रहते हैं. Other than they are very solitary. Other than for breeding purposes, they do not get very close to one another. They like to live on their own. लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं, and I think the data दिखा गया कि 1 to 2 years, sometimes 3 to 4 years के बच्चे माँ से ठीक monkey जैसे अपने मम्मी को cling करके रहते हैं. They cling to their mummy and stay with their mummy for their long time, and they have a peculiar habit. Sloths do not make noise, so they communicate with one another if they're in close proximity by touching their lips. So the babies, other than mother's milk, when they get to learn to eat solid food or different branches or leaves or fruits and seeds and tubers और क्या कहते हैं insects वगैरह, ये मम्मी को lips को touch करते हैं, and by licking them they get the touch or they give the sensation of the food and stuff, and ये अच्छे, they cannot see very well, but they have acute very good sense of hearing, and they have a very very good sense of smell. These are their 2 advantages. And why they are sloth? They are very furry. और एक स्ट्रेंज बात है इसके ऊपर कि they can live by holding their entire body on their 2 upper limbs. जैसे monkeys होते हैं ना, the 2 upper hands से they can hold their entire body. Sloths can even sleep like that. People have found that sloths are sleeping completely by holding a branch of tree with their 2 upper limbs. It's even वो छोड़ नहीं देता, नीचे नहीं गिर जाता है. So this is one thing that they have. They're very much attacked by ocelots and jaguars.
ये लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, and if a sleeping sloth उसे मिलते हैं, then they will try to attack them and eat them. But usually they can climb trees very well, and these trees are 30, sometimes 40 feet tall. So they are found at the heights of 20 feet, 25, 30 feet, 35 feet. So it is not easy for other cats, big cats, to walk and climb the trees so up to that height. So one of their predator are big hawks. ये जो बड़े बड़े ईगल्स होते हैं, ईगल्स और हॉक्स, दे अटैक दिस एनिमल्स एंड दे हंट बाय थ्रू देयर विजिबिलिटी. सो अगर एक हॉक को ये मूव करते देखा, देन दे विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश. आप देखिए, इट इज ऑल वेरी ग्रीन इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. So it is very difficult for another animal जो predator hunting करना चाहता है, unless वो move करे, it is very difficult for them to identify them from the green branches. Here ये sloth इसलिए बना कि if they move very slowly at the high canopy, then their predators actually cannot see them very well. वो लोग पेड़ के साथ, पौधों के साथ और branches और leaves के साथ ऐसे intermingle करके रहते हैं, it appears like it is a green branch. So the animals that feed upon like or would like to hunt sloth, they cannot find them very easily because they are there, but yet they are not there. They camouflage with their environment very good. Now there is one very interesting story about this sloth is they have long furs which protect them from the rain or the temperature fluctuations in the tropical forest. But there is another important part. उसके साथ एक moth का एक symbiotic relation है. Moth means a butterfly like insect. वो क्या करते हैं? These moths move from the soil and sometimes they will come and lay their eggs inside their furs. Is like उसके furs इतने long है कि इसके अंदर बहुत सारे insects अपने बच्चे देते हैं. Ticks, mites, parasites, arthropods, कभी-कभी snails and slugs को भी मिला है. Though those that live within the long furs of these animals, but ये जो moths that come and lay their eggs in between their furs also bring in a kind of a green algae. ये algae क्या करते हैं? उसके फर के साथ मिक्स करके from a long distance they are yellowish or brownish far color because there is interspaced algae, green algae growing between them. दूर से अगर आप देखोगे तो आप उसे it will they appear very green in color, although their original color is yellowish or lightly brownish and they can be easily identified, but because of their symbiotic association with certain species of green algae, ये green algae very nicely grow within their furs, which is very, very strange. And how can an algae go within the body of the animal? Because their body remain very moist because there is so much rain in the tropical forest. So this rain hold water within their outer parts of their hair, and in their outer part of their hairs, these algae thrive. And from a distance, they give these animals a greenish view. So once they are sloth, they do not move them like very, 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 very slow. At the same time, they appear greenish in color in a strong green background of high canopy trees and a tropical forest. It becomes almost impossible for predatory birds or other predatory animals to identify the sloth. So this is an outstanding example of camouflage, and they have become slow over their evolutionary period. ऐसा उसे लगा कि क्यों if we move very slow on high canopy tree, no one can detect us. So इसी तरह they have survived, they have evolved, and till date they have survived in this particular ecosystem. Very little zoos around the world has sloths. I was fortunate enough that I got to see them in the Sea World in Vancouver in Canada, where they are breeding a couple of pairs of brown three-toed sloths there. So they have a very nice face, and if they look at you, they have a very, very childlike, innocent face. Most of the time, they sleep. I found that because their metabolism is very slow and because they move very, very slowly, their need for energy is also very low. That's why they eat and then they significantly spend a large part of their time sleeping. Sometimes they cling to the trees, or sometimes they sleep by hanging from the trees, not upside down like bats, but by holding their hands and hanging like monkeys. Although their externally appearance from a distance, they look like monkeys, but actually they are not connected to the monkeys at all.
they have no relationship with the primate in the evolutionary scale. They form a group of their own. So with this, I conclude my presentation of a one very fascinating animal called sloth, which are restricted to Central and South America, particularly in the tropical, neotropical forest. And before the discovery of South America and Central America, this animal was unknown to the entire modern world. Overall, the destruction of forest, the lack of habitat is also creating the same kind of problem for these animals. Their numbers are dwindling. Some of the species are critically endangered, some are endangered. But overall, in spite of all the challenges, they have thrived in the tropical forests of South and Central America with wide temperature fluctuation, rain, and other parts, and living a big part of their life on the top of their trees. Through their droppings, they are found to be dispersing seeds and fruits of one trees to other places. So they do serve a very important ecological role, and their body is used externally for the laying of eggs and raising youngs of many species of insects, which use their furs as protective environment. So the external fur body of the sloth is an ecosystem of its own. It's a very unique relationship that's not found in other animals, where lots of non-parasitic symbiotic insects have made their nest. Thank you very much. I conclude my presentation here, and thank you very much once again for inviting me to this. I hope Madam has also been able to join. Thank you. Thank you very much, Dr. Sagat Kumar Basuji. Thank you very much. Very informative, very informative. कहाँ जंगल में चले जाते हो आप ये सब जानकारी लेने के लिए? गजब गजब. जंगली आदमी बन गया है. और मैडम तो जंगली लोगों के ऊपर, मैडम इज एन एक्सपर्ट ऑन ट्राइबल पीपल, सो शी नोज इवन मोर अबाउट इट. बट आई थिंक मैडम इज गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस, ये जो स्लॉथ मैंने कहा कि संस्कृत स्लॉथ और लैटिन स्लॉथ और यूरोपियन हर लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, हर किसी लैंग्वेज में स्लॉथ के जो ट्रांसलेशन है उसके इट मीन्स टू बी वेरी स्लो और लेजी. But what do we learn from sloth? I think Madam will give us a little perspective from philosophical touch and conclude today's session. Thank you. Thank you very much. So now we would like to invite Dr. Suparna Sanyal Mukherjee ji. Agnihotri sir, please invite. Thank you. First of all, I would like to thank Dr. Sagat Basuji as he narrated all these things and he shown me the picture of that sloth. One sentence which impressed me a lot, that they look like sloth, but they are not stupid. And that's why they know, not being a student of zoology of any school or any BMS, MBBS college, they know the importance of protein. So when they need, they select that one. We can say also that the Shakha Mrag, that tree animal, क्योंकि बंदरों के लिए तो आया है शाखा मृग वंशाई, शाखा से शाखा पर जाई, मतलब वो शाखा से शाखा पर जाते नहीं, आपने कहा जंप नहीं करते हैं, but they used to spend their life on the trees or the branches of trees. Thank you so much. And now I would like to invite Dr. Suparna Sanyal Mukherjee ji for her philosophical concept over the lifestyle of the sloth and their presence right from the big giant size to the now reduced and limited area of South America. Sorry. So, Dr. Madam, namaskar. Namaste, namaste. Very good evening. Thank you. My earlier speaker has told everything regarding the sloth. So, animal sloth, he has been very vividly giving his speech on this particular aspect. And at the same time, he also emphasized that what should I say regarding the sloth, like the philosophical and such. So thank you very much. But what is the sloth is telling in German, in then the other languages like the Irish language or the any kind of language. So I am not getting into it. But to keeping your word of honor, I can emphasize on this: the sloth in the form of a sustainable sloth, a ethical
and philosophical point of view. The animal sloth, which we have been observed in the jungle, in the forest area, especially uh, my earlier speaker has emphasized in the Amazon forest, in the other forest areas where they are finding out, and the African forest. So these sloths have a particular identity in the animal kingdom. Basically they have come through this evolutionary trend, and the environment and the our supernatural power or the almighty has created this sloth for their specific aspect, or that they need to survive in this environmental condition or in this earth. That's why environment is giving and protecting them, and they are allowing them to survive. That's why they are surviving, and we needed this slots for this the sustainable resources. So sustainability is the concern. When we can say the sustainability, for that reason we can say that the people's desire to giving some empowerment or the emphasizing aspect for the natural setup, because this process also needed to make the food pyramid and the chain of this animal kingdom. So where they are living, what is their situation, what is their life cycle, why they are surviving. So everything is related with each other, and these sloths are also surviving for their every aspects of the life. These sloths are also related with us because the sloths terms is using in life sustainability. If someone is getting very slow and not working properly, so we use this term, the you are looking like a sloth. But these sloths are not the essential. This sloth is the responsibility. So in some cases we have seen the our scripture or our Sanskrit word or Sanskrit philosophical knowledge. So we have seen that some cases this the sloth activities is also needed, because every time we cannot be first. The today's world is the first world, and this world we are surviving, we are regulating our life, and our life sustainability is also continuing. Because if we are getting slow, that means you are dissuaded from your the life track. So this journey, when we are continuing with this journey, sloth is also needed, because sometimes if you are not taking rest, if you are not having any slow movement, so that time you cannot be survived, because your nature of surviving and your philosophical thought is all should be in sloth regulatory, because sometimes you have to observe the situation. When you are observing the situation, your behavior should be like a sloth. But when you are observing, that means if you are going first, so someone will be will not recognize you. Someone would not allow you to go first. So to recover or to win the race, you have to be sometimes slow. At the same time, this sloth is giving the ethical point of view, like, so when slothing there, the natural environment can be a life-changing experience. So life-changing experience, how you have emphasized it, it has to be observed that they are so they are living or sustaining their life cycle with this very safety way. That's why they are slow. When you are doing your life sustainability in safe measure, so you should be slow. Like if you can go for the any kind of investment, like if you can buy something in 5 lakhs and you can spend your all supportive savings for this expend you 5 lakhs, but you cannot be sustained. For maintain the sustainability, economic sustainability, you can buy something in the 5 lakhs rupees, but you can ensure it through the EMI. So this
EMI is the sloth practice. This sloth practice is giving you the feedback. So what has happened? So from your salary, you can expend 10,000 for this 5 lakhs you are recovering. At the same time, you can expend your life cycle with this, the sustainable ratio. So you are maintaining your sustainability with the slothism, and which is giving you the more sustainability and life expectancy. At the same time, if you can say that, and if you can promote yourself in the general health issues and the general life cycle procedure or the philosophical process, so you should maintain some sloth for these purposes, because if you can go first and if you can do the development in a very fast, so there is a chance of mistakes. When the chances of mistakes is there, if you are very fast, then you can maintain some sloth practice. That means that you can go and move very practiced way at the same time to make a major senses to step forward this, or what step you could be go fast and you can step forward. It is the movement is depending upon your sloth, and this philosophy is also protect you for your near future, to give the high ratio and the high potentiality in your life sustainability. So, in the same time, the habitat conservation and the enforcement and the reinforcement, resustainability, restoring, everything is depending upon this sloth activities and sloth philosophical way. And when you are giving and observing and advocating for some person, so if you can believing some person, depending upon some person at a glance, but you don't know the person, the what the person can behave with you on near future or the tomorrow. You don't know the tomorrow. We don't have the any idea for tomorrow. When the day after tomorrow, we can say that today what is going on and what has happened we were witnessed, but what will be we are not. There is no symptoms, or there is no speculations what you can expect that may happen, may not be. So in that case, if you can believe it in very fast, that means the person may be dissuade you, maybe betrayed you, your faith, your consent, whatever may be the person can do. So in that cases, the believing is also is depending upon the observation with the slothery aspect. That is the philosophy of life. If we can believe in person without any observation, without any noticeable manner, fashion, behavioral aspect, if we can go for the behavioral sciences, the behavioral opportunities, then only we can think upon the persons whether they are suitable for you or not. So in that cases, the philosophy of sloth is also very important. We can learn so many things from the sloths. So sloths are also expanding their life because they have the community living system. They have the community engagement. They are also belonging to the community, because there is a very dangerous situation may happen for them in their lifespan. Any animal like the tiger or the cheetahs can hunt, and they can uh, destroy the sloth community in any time, any moment, any situation. But this sloth, what they will do, they cannot run fast, they cannot move fast, they cannot. That is their physical activities, their sustainability, their origination is like that. They have built up like that, and the environment has created that. The Almighty has created in the soil. So this is the philosophy how the slothism is maintaining their life sustainability. Well, in any cases, if we can see in our educational system,
The slow learner in the education activities or education initiative, we have seen that the slow learners are very not good enough for their academic achievement. So when they are not scoring, so their academic achievement is very less. What the teachers can do, the teachers have the potentiality to build up their career. So it is very impossible for them to understand, make them understand. It is very difficult for the teachers. Then the other technologies like the audiovisual technique, then the therapeutic technique, then the technique which they are being interested, so they can teacher can apply. So this is the philosophical thought of when we can develop, how we can develop these slow learners from slothism to the developmental aspects. So this is the process we can perform, and in our day-to-day life, it is very important for making sloths to the higher optimum level. So in that cases, these animals are also securing them in the community development and the process which they can hide from the wild animals which they can bite or they can eat them in any aspects. And this education, with this educational initiatives, we can also emphasize on the challenges and solutions. Challenges and solutions is depending upon every aspects of our life, in the philosophical thought, in the ethical thought, or in the day-to-day life sustainability, every aspect. How this can, the sloths is also very slow movement, the slow activities. These sloths also giving you some benefits, like the those animals are not yet been looked after by this the protector. When the environment where they are surviving, they have to eat. So when they are searching their peers, so that time their movement is very short. So these sloth movement oriented animals they can eat, and this also maintain the food pyramid, the food chain, and with the same aspect. This is the, though they are the herbivorous, this in that cases those animals, those plants are that means breeding up and they are developing. These sloths are also having the natural habitat and natural system and natural sustainability for their life sustenance. But in the challenges in that cases, it has been observed that the rural and urban areas, if we can see the developmental aspect, the rural is very slow because there is no development, there is no electricity, there is no road connection, there is no communication. So this is the sloth life, and the people, those who are living in the rural area, their life sustainability is also slow because their food habits is different. This slothism, how? Because we have to develop them in the development aspect. So they are not needed. Yes, they are needed, but they are needed for their indigenous processes of life. That is, they are practicing, they are inculcating. When a person is arts and craft, maintaining their arts and crafts, so it is not a very easy way to develop and fast movement, because arts and crafts is a very sloth orientation and sloth mechanism. At the same time, which we have seen, there is the saris, those saris are 8 lakhs, 10 lakhs rupees is the price, and those saris have there are so many very neat and clean crafts is there. So this crafts is maintaining, and this crafts is when they are weaving these crafts in the saris, it is taking the more time. So this is the very, this slothism is sloth activities will give you the sustainability. That means your concentration, your adjustment, your dedication, these are also related with this sloth practice. These are the challenges, and these challenges, if you can accept it, so the solution is 8 lakh sarees.
Solution is the sari is 10 lakhs rupees. So one sari, if you earn 8 lakh, so within if you take the 3 months, so if a person, those who are very fast in the very fast orientation, they cannot earn 8 lakhs within a 3 months. But one aspect is very important over there. If you can have the sustainability and your ethical power and philosophical orientation, you can art, and your sloth activities will give you the more potentiality. So this is the challenges which we are doing, because sloths are also doing and practicing their life sustainability with this the very dangerous situation also they can survive, and still they are surviving. So in that cases, those who are sloths are not, it is not the curse, it is maybe the bliss from this Almighty. So it is also the natural habitat and natural system, and sustainability also maintaining to this slothism. So hence we can say that this is the rare chance to enjoy the beauty of this, especially the enormous potentiality, the leisure marbles on actively support the protection through sustainable sloth activities, and there should be incorporate the sloth tourism, so which can develop, and which is a challenge for the 21st century. The sloth tourism can be explored in the different places and different sites, which can be earn more, which can be develop more activities from there. So it is very interesting that the future generation, the future of what they can learn from this sloth, they can learn the tolerance, they can learn the sustainability, they can learn the ethical power, they can learn the the sustainable care, then the practice, then the sloths can give you the ethical practice, the sponsoring neighborhood, looking after the neighborhood, the various sustainable projects you can do with this, the sustainable activities on the points of ethical, and the encouraging through awareness of their natural habitat, at the same time the practice in our nature. So practice is also very good for this. We can learn from these sloths, and their activities is not deteriorating, but it is the maintaining and ethical, philosophical, and the power of the sustainable growth. Thank you very much. Thanks to the all. Thank you very much, madam. Thank you very much. For technical conclusion, I would like to request, मैं फिर आदरणीय एनडी शर्मा जी को अग्निहोत्री सर के पहले बुलाना चाहूंगा। आदरणीय एनडी शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हो गया? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये आज का विषय जो था, एक ऐसा था कि जो यहाँ की परिस्थिति के अंदर हम लोगों के लिए उसका ज्ञान बहुत ही कम था, अगर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं। लेकिन जैसे कि कहा गया कि अगर हम इन एनिमल्स के लिए, क्योंकि अब आजकल तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं, हर जगह पर वैसे क्लाइमेट चेंज की एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। जब हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इन एनिमल्स के लिए हम अपने इंडिया के अंदर ला करके और उनको प्रोपोगेट करने का प्रयास करें। क्योंकि ये भी तो अब आजकल तो वो चेंज है नहीं कि पहले जैसा कि ये क्लाइमेट जो है ऐसी वहां पर है, वैसे क्लाइमेट यहाँ पर नहीं बन सकती। अब तो हर जगह पर जो है जैसी क्लाइमेट चाहे वैसी क्लाइमेट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वर्क करें कि किस प्रकार से उनके लिए जो है कैप्टिविटी के अंदर, हमारे इंडिया की कंडीशंस के अंदर उनके लिए हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। जो ये किया जा सकता है, तो हो सकता है कि कोई नई ब्रीड भी इनसे हमारे लिए डेवलप की जा सके, क्योंकि इनब्रीडिंग भी हो सकती है, क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है, कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे एनिमल्स हों जो कि उस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो केवल अमेरिका के अंदर ही उनका आवास जो है रेस्ट्रिक्ट हो गया है,
उस आवाज के से हमें उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उस क्षेत्र के अंदर, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे एनिमल्स को हम उनकी यूटिलिटी के अनुसार कि और कैसे हम उनके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या उनकी यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको इसमें फॉरवर्ड आना चाहिए। और इस प्रजाति के लिए जो केवल अमेरिका के अंदर है, अब चूंकि हर जगह पे हर तरह का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है, तो उनको हम प्रोपोगेट करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस प्रजाति का हमारे यहाँ भी प्रोपोगेशन हो और इनके लिए भी हम यहाँ पर रख सकें। ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे लिए क्रिएट करना चाहिए। आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आजकल हर तरह की सिचुएशन हर जगह पर क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको तो नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आशा और विश्वास करता हूँ कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो आज भी आए, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस सब्जेक्ट के लिए, इनके प्रोपोगेशन के लिए कुछ अलग से टेम्परेचर मेंटेन करके उनके लिए रखने की व्यवस्था की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये ऐसा विषय था कि जिसके संबंध में यहाँ के हमारे जो स्टडीज हैं उनमें बहुत कम पढ़ाया गया, लेकिन आज आप लोगों के ज्ञान से उसमें काफी ज्ञान का वर्धन हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा नहीं विश्वास करता हूं कि हमारे साइंटिस्ट इस विषय में और आगे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जिससे कि इनके लिए हम यहाँ पर ला सकें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अग्निहोत्री सर। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। बहुत ही नया विषय था और बहुत ही गहराई से हमारे आज के अतिथि वक्ताओं ने इस पर चर्चा की, ये कहते हुए, बारंबार कहते हुए कि इसके बारे में जानकारियां बहुत कम ही मिलती है। तो आदरणीय एनडी शर्मा साहब का, आदरणीय डॉक्टर शेखर बसु जी का और मैडम संवर्धन मुखर्जी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी शर्मा साहब ने जो लास्ट में एक प्रपोजल रखा है तो बहुत ही वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये मान चल रहे हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज वाली बात आती है, ये कॉन्सेप्ट भी उनमें से एक है। और इसके लिए तो जूलॉजिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चार लोग कॉमन प्रोजेक्ट लेके देखे और उसकी देखे कि भारत में भी ये स्पीसीज आ जाए तो लाभ हानि तो नहीं देखना है इतना, एक हमारे पास भी एक हो जाएगा। तो जो हैबिटेट उनके लिए कंड्यूसिव है, उस हैबिटेट के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या साउथ के डेंस फॉरेस्ट हो, जहां भी उनके लिए हैबिटेट सूट कर सके। बहुत सारे साउथ के भी अच्छे स्टेट है, बेंगलोर है, अपना कर्नाटक, मैसूर या केरल, बहुत सारे कोस्टल एरिया भी, जहां भी उनकी लाइफ सर्वाइव हो सके, वो कंडूसिव एरियाज की स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में ये कोई ऐसी चीज बनाई जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो अक्सर लगभग सभी कंट्रीज में जाते हैं जहां पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री गए नहीं 40, 50, 70 साल से। तो ऐसा भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है सेक्रेटरीज लेवल पर या दूसरे भी, कि भारत की, जब वो हमारे यहाँ चीता इंपोर्ट कर सकते हैं या दूसरी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ये हमारे लिए अपने पुरानी चली गई मुगलों के समय की हीरा जवाहरात तो हर चीज ला रहे हैं वहां से, ब्रिटिशर्स के यहाँ से, सब जगह से। तो ये भी प्राणी अगर साउथ अफ्रीका, अमेरिका से हम लोग उनको ले सके अपने इंटर कंट्री रिलेशनशिप के अंतर्गत, तो ये बहुत बड़ा आपका सजेशन है। थैंक यू सो मच, बहुत वेरी बिग सजेशन। और अब सोचते हैं शेखर साहब और सभी लोग इस चीज को इत्तेफाक करेंगे। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत आपका आभार। आप इतने आशीर्वाद देते हैं, इतने लेट टाइम में भी, और इतनी हमारे लिए वैध हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे सर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत रामवीर शर्मा सर। कहना आदरणीय चाहेंगे। रामवीर शर्मा सर। रामवीर शर्मा सर हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जय हो। ज्ञान के लिए तो बैठे हैं। ज्ञान, हाँ, जानकारी काफी अच्छी मिली। एक्चुअली क्या है, इसकी जो सीरीज आती है अपने जियोलॉजिकल उस पे, इंडिया पे, जियोग्राफिकल इंडिया और एनिमल प्लेनेट पे, तो कुछ जानकारी मेरे को इसमें बारे में थी, मगर बहुत सारी जानकारी बसु जी ने बताई।
एडॉप्शन और अपने एकोमोडेशन, ये दो लक्षण हैं जीवित प्राणी के, तो उन्होंने अपने स्लॉथ के अंदर मिलते हैं। बहुत एक चीज और उन्होंने बताया कि इसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है, तो और मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से इसकी गति कम होती है। मुझे जहाँ तक याद है, इसकी एक दिन में लगभग 40 यार्ड 45 यार्ड ही चल पाता है, इतनी गति कम है। तो ये कफ का लक्षण मैंने पहले ही बता दिया था। कफ प्राणी वर्गीय द्रव्य का प्राणी है और 20 घंटे सोता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो कुल मिला के 20 घंटे सोएगा तो मेटाबॉलिक रेट कम होगी। मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो वो कफ वर्गीय द्रव्य में आ जाता है। और इसकी एज बहुत कम है, फिर भी मेटाबॉलिक रेट कम होते हुए भी एज कम है, 40 से 45 साल ही जीता है। और इसका जो शिकार करते हुए मैंने देखा है उसमें, एनिमल प्लेनेट में, ऊपर से बाज आता है, इसको उठा ले जाता। तो ऊपर से उन्होंने बताया था कि ग्रीनिश इसके अंदर अपने वो एल्गी रहती है, इसलिए कलर अलग लगता है, तो पत्तियों में छुप जाता है, और फिर भी इसका शिकार कर लेते हैं। दूसरी चीज बताई उन्होंने कि जो मादाएं हैं वो अपने बच्चों के प्रजनन के लिए, उनको अपने प्रोटीन पूरी करने के लिए अंडे और छिपकली भी खाती हैं। ये तो नियम है कि मादाएं ही ऐसा करती हैं। जैसे मच्छर मादा होता है, वही खून चूसती है अपने अंडों को प्रजनन करने के लिए, तो मादाओं के करना पड़ता है। ये बढ़िया बताया। नर नर नहीं करते ऐसा, तो उनको बेचारों को करना पड़ता है प्रोटीन के लिए। तो मादाओं का काम है खून चूसना, तो इस तरह से ये अपने बच्चों के प्रोटीन के लिए करती हैं। मैंने भी पढ़ा था कि इस तरह से ये अंडों को भी खाते हैं। तो नर और मादा का आज पता चला। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव था और जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। संभल के बोलना चाहिए, ऐसा तो पूरे पूरे वर्ग विशेष में संदेश चला जाएगा। मैं ये देखो, 21 तारीख को रात को मैं रामवीर जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। वो उस दिन एक्चुअली तो बैक टू द फ्यूचर डे है, हमने उसका टॉपिक रखा है आयुर्वेद स्ट्रेटेजी फॉर गोल्डन फ्यूचर। उसमें नवीन गुप्ता जी यूके से बोलेंगे और हमारे रामवीर शर्मा जी बोलेंगे। अरे जय मैं हो। मेरे को फ्यूचर के लिए चाहूँ, कोई बात। आप बहुत प्यारा बोलते हो आप लोग, मतलब एंडी शर्मा जी, रामवीर शर्मा जी, दोनों की जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू, थैंक और यू। हमारे अग्निहोत्री सर की तो हो ही हो, जय हो। बहुत बहुत गुड नाइट। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।